क्वेश्चन 1 ट्राई करिवा ड्रिंकिंग सोडा गोटे कोन अटे मींस ड्रिंकिंग सोडा रो नेचर कोन अटे ऑप्शन अनुसार अल्कालाइन एसिडिक न्यूट्रल हबो ना ऑक्सीडेंट हबो व्हिच ऑप्शन हे जिवो राइट आंसर ड्रिंकिंग सोडा टा गोटे कोन अम्लीय अटे अम्लीय एसिडिक नेचर अटे ठीक अछि ऑप्शन 2 एसिडिक इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्युमिनियम एल्युमिनियम रे थिबा मुख्य ओर केउटा व्हाट इज द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्युमिनियम व्हिच ऑप्शन इज योर राइट आंसर डोलामाइट कॉपर लिग्नाइट हबो ना बॉक्साइट हबो एल्युमिनियम जते बेले भी क्वेश्चंस आसीओ मन रखंतु एल्युमिनियम रो प्रिंसिपल ओर मुख्य ओर होची बॉक्साइट ऑप्शन 4 बॉक्साइट इज योर राइट आंसर व्हिच गैस इज यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर निया लिभाइबा पई हमें केउ गैस को व्यवहार करंती which gas is used as a fire extinguisher the gas is try kariba carbon dioxide CO2 option 1 is your right answer carbon dioxide is your right answer next which one of the following acids is used in battery रे निम्नलिखित मध्यरु केउ एसिड को व्यवहार करा जाय बैटरी रे केउ एसिड को व्यवहार करा जाय सल्फ्यूरिक एसिड ऑप्शन 3 सल्फ्यूरिक एसिड को बैटरी रे व्यवहार करा जाय नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच व्हेन आयरन रॉट्स इट्स वेट जेतल आयरन रस्ट हे जिवो ठीक अछि इट मींस आयरन जेतल कलंकी लागि जिवो यार ओजन रे कोन आसीबो डिक्रीज इंक्रीज हबो ना सेम रहइबो ना प्रथमे इंक्रीज हबो देन डिक्रीज हबो व्हिच ऑप्शन हे जिवो राइट आंसर बिकॉज़ एथरे कोन ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन हे जिवो दैट्स व्हाई यार वेट ओजन कोन हे जिवो इंक्रीज हबो ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर इंक्रीज हबो माने रखंतु नेक्स्ट who developed hydrogen bomb को किए डेवलप करथिले हाइड्रोजन बम को किए डेवलप करथिले एडवर्ड टेलर ऑप्शन 3 एडवर्ड टेलर हाइड्रोजन बम को डेवलप करथिले नेक्स्ट क्वेश्चन द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर इज एयर रे वायु रे मुख्य केउ गैस अधिक परिमाण रे रहिछि जबक्षारजान नाइट्रोजन इज योर राइट आंसर ठीक अछि नाइट्रोजन जबक्षारजान जहा अधिक परिमाण रे रहिछि हु प्रपोज्ड फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी प्रथम एटॉमिक थ्योरी विषय रे किए प्रस्ताव दैथिले हु प्रपोज्ड फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन थिले जे कि प्रथम एटॉमिक थ्योरी ऊपर प्रपोज करथिले नेक्स्ट क्वेश्चन ए डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ द्वारा केउ रोग हुए ए डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ इज मलेरिया मन रखंतो मलेरिया हुए ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर नेक्स्ट The basic structural and functional unit of living organism is प्रश्न कौन कहला the basic structural and functional unit गोटे एक गोटे कौन से एक living organism रो that is कौन है जीवो basic unit होची cell option 1 cell is your right answer ठीक अछि option 1 समस्त चूज करछंती next question milk of magnesia is a suspension of milk of magnesia गोटे कहार suspension अटे Milk of magnesia is a suspension of magnesium hydroxide. Option 3 magnesium hydroxide ro gote suspension अटे. Next universal donors are people with the blood group जो माने universal donor माने समस्त को रक्त दान करि परिबे तो सेही ब्लड ग्रुप टी केउ ग्रुप अटे सेही ब्लड ग्रुप टी होची ब्लड ग्रुप O ब्लड ग्रुप ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन The function of hemoglobin is to okay blood रे कोन रहिछि hemoglobin रहिछि जहा कोन करे एहार काम होउछि ट्राई करबा which option is your right answer ऑक्सीजन को वहन करिवो अम्लजान को कोन करिवो वहन करिवो कैरी ऑक्सीजन ऑप्शन 2 कैरी ऑक्सीजन इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन लैक्टोज इज प्रेजेंट इन लैक्टोज कोथरे प्रेजेंट थाए लैक्टोज प्रेजेंट थाए मिल्क रे ठीक अछि मिल्क रे लैक्टोज प्रेजेंट थाए नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ दिस इज ए कम्युनिकेबल डिजीज निम्नलिखित मध्यरु केउटा एक संक्रमित रोग अटे कम्युनिकेबल डिजीज होची आपनकर डिप्थेरिया हि जिवो गोटे कोन कम्युनिकेबल डिजीज ऑन 2 इज योर राइट आंसर ह्यूमन बोन डज नॉट कंटेन मनुष्यर जो अस्थि रहिछि हाड रहिछि एथिरे कोन न थाए एथिरे ऑक्सीजन रहइबो नै ठीक अछि ऑप्शन 3 ह्यूमन बोन डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन नेक्स्ट क्वेश्चन द पिगमेंट व्हिच गिव्स कलर टू ह्यूमन स्किन इज ओके केउ पिगमेंट टी जहा कि हम स्किन रो कलर डिसाइड करिवो दैट इज केउ पिगमेंट मेलानिन मन रखंतु मेलानिन हम स्किन रो डार्क रहइबो कि व्हाइट रहइबो दैट इज
मेलानिन ऊपर डिपेंड करे। नेक्स्ट, ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट्स, फोटो इलेक्ट्रिक सेल कौन कन्वर्ट्स करे? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे कन्वर्ट करे। ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। ठीक अछि, सन रो जो लाइट पडुची, ठीक अछि, ताको इलेक्ट्रिक एनर्जी रे कन्वर्ट करिवो गोटे फोटो इलेक्ट्रिक सेल रो काम। नेक्स्ट, द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज, गोटे न्यूट्रल सॉल्यूशन रो पीएच केते हमें जानि चंती 0 to 7 होची अम्लीय एसिडिक एवं 7 to 14 होची दैट इज बेसिक क्षारीय। तो ऑप्शन 2 7 हि जिवो पीएच वैल्यूटा कोनसे को न्यूट्रल सॉल्यूशन रो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज, निम्नलिखित मध्यरु केउटा एक भौतिक परिवर्तन अटे? फिजिकल चेंज हि जिवो आपनकर सब्लिमेशन, माने कोन होची सॉलिड लिक्विड स्टेट को न जाई डायरेक्ट गैस रे कन्वर्ट हुए, सॉलिड कन्वर्ट हो डायरेक्टली टू द गैस, तो एटा होची फिजिकल चेंज। बुझी हला, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन जाको हमें कहंती आई थिंक ओडिया। नेक्स्ट, द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज, महुरी थिबा मुख्य उत्पादनडा माने मुख्य कंपोनेंटटा कोउटा? मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज फ्रुक्टोज। ठीक अछि, ऑप्शन 4 फ्रुक्टोज अछि हनी महुरे। नेक्स्ट, which of the following is a super cooled liquid, निम्नलिखित मध्यरु केउटा एक सुपर कूल्ड लिक्विड अटे? सुपर कूल्ड लिक्विड होजी आपनकर ग्लास। ऑप्शन 3 ग्लास इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following has the maximum specific heat capacity, निम्नलिखित मध्यरु कहा पाखरे मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहिछि? मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा पाखरे रहिछि? मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मींस व्हाट? जहाँ गोटे टेम्परेचर को राइज करिया पई जो सब्सटेंस रे जो अमाउंट टा दरकार, दैट इज मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट। सिंपल बुझंतु गोटे टेम्परेचर को बढ़ाइबा पई स्पेसिफिक हीट, तो सेटा वाटर पाखरे रहिछि। ऑप्शन 1 वाटर हिज हेयर राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, निम्नलिखित मध्यरु केउटा एक स्केलर क्वांटिटी अटे? स्केलर क्वांटिटी मींस देयर इज नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड रहिबो, डायरेक्शन रहिबो नाही, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। ऑप्शन 3 एंगुलर मोमेंटम इज योर राइट आंसर। एंगुलर मोमेंटम होची गोटे स्केलर क्वांटिटी। इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस बिकॉज ऑफ, कारण कोन कोन से आइस रे चलीबाटा कष्ट हुए, बिकॉज कोन थाए एठी लेस कोन हबो फ्रिक्शन रो भाव थाए, घर्षण बल काम करे नाही, absence of friction, absence of friction is your right answer. Option 1 is your right answer. The chemical substance present in bones and teeth is, निम्नलिखित केउ केमिकल सब्सटेंस बोन एंड टीथ रे प्रेजेंट थाए? ठीक अछि, बोन एंड टीथ रे निम्नलिखित केउ केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट थाए? ट्राई करिबा। ऑप्शन 1 कैल्शियम फॉस्फेट इज योर राइट आंसर। माने रखंतु कैल्शियम फॉस्फेट बोन्स एंड टीथ रे प्रेजेंट थाए। ठीक अछि, यदि हम कथा बा टीथ रे मैक्सिमम परिमाण रो रहिछि कैल्शियम फॉस्फेट। ओके, हमरो टीथ रो जो एनामल पार्ट टा होछि दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिबा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल, निम्नलिखित मध्यरु केउटा गोटिए बायोडिग्रेडेबल अटे? इट मींस एटा हम डिकंपोज करि परिबा। बायोडिग्रेडेबल केउटा हे परिबो? पेपर। ऑप्शन 1 पेपर इज योर राइट आंसर। पेपर होची गोटिए बायोडिग्रेडेबल बिकॉज एटा वुड रो तयारी होची। ठीक अछि, वुड रो सेलुलोज पार्ट रो, तो एटा हम इजीली डिकंपोज करि परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, atoms of same element having different mass number are called? ठीक अछि, सेम एलिमेंट रहिबो बट डिफरेंट मास नंबर रहिबो, सेटा हम कोन कहंती? सेम एटॉमिक नंबर but different mass number, that is isotopes. Option 2 isotopes is your right answer. माने रखंतु isotopes. Next, which of the following is a natural polymer, निम्नलिखित मध्यरु केउटा गोटिए नेचुरल पॉलीमर अटे? नेचुरल पॉलीमर हिजबो आपनकर स्ट्रेच हिजबो राइट आंसर। ठीक अछि, ऑप्शन 4 जानि जंदी हमें कॉटन भी हे परिबो, रबर मध्ये ऑप्शन रे रहले रबर मध्ये गोटिए नेचुरल पॉलीमर हे परिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following non-metals shows allotrophy in the liquid state, निम्नलिखित मध्यरु केउ नॉन मेटल, ओके केउ नॉन मेटल एलोट्रोफी शो करिवो जेतेले सेटा लिक्विड स्टेट रे रहिबो? एलोट्रोफी शो करिवो। ठीक अछि, इट मींस डुअल नेचर शो करिवो, मोर देन डुअल नेचर, दैट इज व्हिच ऑप्शन इज योर राइट आंसर? सल्फर। ऑप्शन 2 सल्फर इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, which element found in all organic compound, समस्त ऑर्गेनिक कंपाउंड रे केउ मौलिक आमे पाइबा, केउ मौलिकटी मिले, दैट इज कार्बन। ठीक अछि, कार्बन कॉमन गोटे एलिमेंट दैट इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
द केमिकल दैट इज यूज्ड टू रिपेन मैंगोस मैंगो को पचाइबा पई हमें क्यों केमिकल्स को यूज करंती आपण सुनिथिबे गोटे वर्ड कार्बाइड दिया जाय ठीक अछि so that is calcium carbide option 2 is your right answer calcium carbide hi jibo next question dry ice is the solid form of dry ice कहार एक solid form अटे dry ice होची कार्बन डाइऑक्साइड रही गोटे solid form को dry ice कहा जाय ठीक अछि CO2 next the common name of sodium bicarbonate is sodium bicarbonate रो common name टा कोन साधारण नाम होची हारो सोडियम बाइकार्बोनेट रो साधारण नाम हेउची दैट इज बेकिंग सोडा माने रखिबा बेकिंग सोडा इज योर राइट आंसर नेक्स्ट व्हिच एलिमेंट बिहेव्स केमिकली बोथ एज मेटल एंड नॉन मेटल निम्नलिखित मध्यरु क्यों एलिमेंट क्यों मौलिक बिहेव करिवो केमिकली बोथ मेटल एंड नॉन मेटल दैट इज व्हिच ऑप्शन इज योर राइट आंसर बोरॉन बोरॉन आपनकर दैट इज बिहेव करिवो केमिकली बोथ मेटल एंड नॉन मेटल The scientific name of common salt साधारण लुणर scientific वैज्ञानिक नेम टा कोन that is sodium chloride NaCl ठीक अछि sodium chloride is your right answer next question biogas majorly contains biogas रे मुख्यतः कोन थाए biogas मुख्यतः मीथेन थाए ठीक अछि मीथेन gas is your right answer option 2 मीथेन होय जिवो यार right answer Which of the following is a noble gas? निम्नलिखित मध्यरु केउटा एक noble gas अटे? Argon is your कोन noble gas. Option 1. The smallest particle of an element is called गोटे element गोटे मौलिकर smallest particle को कोन कहै जाय which cannot be divided माने सेटा को further time हमें divide करि परिबा नाही that is atom. Option 3. Atom is your right answer. Next. The gas used to extinguish fire निया लिभाइबा पे हमें केउ गैस को व्यवहार करंती निया लिभाइबा पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को व्यवहार करंती ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर नेक्स्ट द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स एसी टू डीसी मींस अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट रे केउ डिवाइस कन्वर्ट करे रेक्टिफायर यूज करा जाय ठीक अछि रेक्टिफायर कोन करिवो दैट इज एसी को डीसी रे कन्वर्ट करिवो Smog is a combination of smog कहार एक combination अटे smog होची आपनकर smog आउ fog रो combination अटे option 4 smog and fog is your right answer the layer of atmosphere used for radio waves transmission okay atmosphere रो केउ layer रे radio wave transmission हुए radio wave that is ionosphere ठीक अछि ionosphere रे radio wave transmission हुए next SI unit of luminous intensity रो SI एकक होची that is candela option 3 candela is your right answer okay next question a rear view mirror for driving is driving रे जो rear view थाए ठीक अछि आपनकर बाइक ड्राइविंग रे जो हैंडल रे जो मिरर टार होची that is एटा केउ प्रकार मिरर अटे concave ना convex question 20 convex mirror ठीक अछि option 3 convex mirror is your right answer एनीमोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एनीमोमीटर को हमें कोथि पय व्यवहार करंती एनीमोमीटर इज यूज्ड टू मेजर विंड वेलोसिटी को मापिबा पय द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए वॉशिंग मशीन केमिति काम करे क्यों सिद्धांत अनुसार काम करे मन रखंतु एटा उडे फोर्स सेंट्रीफ्यूगेशन ठीक अछि सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स अनुसार काम करे सेंट्रीफ्यूगेशन ठीक अछि option 1 is your right answer next question bar is a unit of which one of the following निम्नलिखित मध्यरु कहार एकक होची बार कहार एकक प्रेशर रहउची एकक बार option 3 प्रेशर रो एकक हिजबो बार माने रखिबो next question noise is measured in कोन noise को हमें डेसिबल रे मेजर करि पाइबा डेसिबल option 4 decibel is your right answer which color is the complementary color of yellow रो गोटे complementary color होची that is माने रखिया blue color हिजबो आपनका right answer the sky appears blue because of okay the sky appears blue because of केउ कारणरु आकाश नील देखा जाय the sky appears blue because of माने रखंतु light कोन करूची ना scatter करूची scattering of light जो 2 हिजबो यार right answer ठीक अछि scattering of light जोगु आकाश कोन नील देखा जाय नील आकाश हमें कहंती नेक्स्ट
In a nuclear reactor, heavy water is used as nuclear reactor रे heavy water रो काम कोन heavy water को आमे कोथि पे व्यवहार करंती nuclear reactor रे ट्राई करिवा क्वेश्चन नंबर 2 nuclear reactor रे heavy water को आमे यूज करंती गोटे moderator भाबे ऑप्शन 3 moderator is your right answer ठीक अछि गोटे moderator भाबे काम हुए heavy water को next the filament of electric bulb is made of गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब रो फिलामेंट कोथरे तयारी इलेक्ट्रिक बल्ब जदि आसीबो मन रखंतु दैट इज टंगस्टन रे तयारी सेटा ऑप्शन 3 जदि इलेक्ट्रिक बल्ब जगह रे आसीबो इलेक्ट्रिक हीटर देन सेटा हो निक्रम ठीक अछि तार जो व्हाइट टा निक्रम रे किंतु इलेक्ट्रिक बल्ब रो फिलामेंट टंगस्टन मन रखिबा नेक्स्ट while catching a ball a player pulls down his hands to the lower माने एटा काहे करे से जतेले जने खेलाली कोन करे कोनसी बॉल को कैच करे कैच धरिबा समय रे से तार हाथ को कोन करे तळ को टाणी आने तो एमती काहे की करे बिकॉज़ से कोन करबो जो मोमेंटम टा रहिछि सेटा को स्लो डाउन करिया पे ओके मोमेंटम जो हैंड्स लोअर द मोमेंटम ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर नेक्स्ट which of the following pairs of physical quantities have the same dimension निम्नोक्त मध्यरु केउ physical quantity रो dimension same unit अटे same dimensional formula same dimensional unit अटे कहार क्वेश्चन 5 work आउ energy रो ठीक अछि same dimension रहबो work and energy next question what is the unit of watt कहार एकक अटे what is the unit of that is power रहुछि एकक what is the unit of power next the clouds float in the atmosphere because of their low clouds माने कोन मेघ कोन करे atmosphere वायुमंडल रे भासमान अवस्था रे रहे because of their कोन low pressure ना density हबो क्वेश्चन 7 low density जोगु atmosphere रे cloud भासमान अवस्था रे रहे next which gas is used in filling electric bulb रे हमें क्यों गैस फिल करंती इलेक्ट्रिक बल्ब रे क्यों गैस थाए आर्गन गैस थाए ऑप्शन 2 आर्गन गैस इज राइट आंसर मन रखिबा आर्गन गैस रहउछि नेक्स्ट द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रो एसआई एकक कोन हेबो कूलम ऑप्शन 2 कूलम इज योर राइट आंसर इलेक्ट्रिक चार्ज रो एसआई एकक होछि कूलम मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस जेतेले इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करियो देन कोन प्रोड्यूस हो इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कले इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ऑप्शन अनुसार मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो ठीक अछि मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय हाइड्रोजन को के डिस्कवर करथिले हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय दैट इज कैवेंडिश ऑप्शन 1 कैवेंडिश इज योर राइट आंसर व्हाइट फास्फोरस इज ऑलवेज केप्ट अंडर व्हाइट फास्फोरस को ठीक अछि कोथरे रखा जाय व्हाइट फास्फोरस इज ऑलवेज केप्ट अंडर वाटर रे ही रखा जाय ऑप्शन 4 वाटर इज योर राइट आंसर पॉलीथीन इज पॉलीमर ऑफ पॉलीथीन कार एक पॉलीमर अटे पॉलीथीन इज पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ऑप्शन 1 ओके रिपीटेड क्वेश्चंस रहिछि नेक्स्ट the ore which is found in abundance in India is okay भारत रे केउ अति अधिक परिमाण रे मिले the ore which is found in abundance in India is that is question 13 monazite is your right answer ठीक है monazite next question who suggested that the most of the mass of atom is located in nucleus ये प्रस्तावित करथिले ओके कौन से को एटम रो मुख्यतः जो मास रहउछि ता एटम रे रहउछि ओके मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस कौन से को एटम रो मास ता न्यूक्लियस रे रहउछि माने यार केंद्र रे रहउछि याको के प्रस्ताव दैथिले क्वेश्चन 15 रदरफोर्ड ठीक अछि रदरफोर्ड जो अल्फा पार्टिकल को स्कैटर करके एक्सपेरिमेंट करथिले एंड रदरफोर्ड कोन करथिले प्रस्तावित करथिले ओडे एटम रे कोन थाय न्यूक्लियस थाय से न्यूक्लियस रे ही मास कोन होछि सेंटर रे थाय नेक्स्ट which one of the following is a cation निम्नलिखित मध्यरु केउटा गोटे cation गोटे होछि cation anion तो cation केउटा हिजबो एमोनियम दा होछि गोटे cation ठीक अछि ऑप्शन 3 हिज वेयर राइट आंसर एमोनियम नेक्स्ट क्वेश्चन
which of the following is not a greenhouse gas निम्नोक्त मध्यरु केउंटा गोटिए greenhouse gas अटे which of the following is not a greenhouse gas that is carbon monoxide आपनकर गोटिए greenhouse gas नुहे not a greenhouse gas ठीक अछि carbon monoxide हे जो यार राइट आंसर ओके इठी नॉट अछि ध्यान देबा नेक्स्ट the most abundant inert gas in the atmosphere is atmosphere थिबा अधिक परिमाण रे केउ inert gas रहिछि inert gas that is argon option 3 is your right answer vinegar is a commercial name of vinegar ro commercial name ता कोन हबो vinegar is a commercial name of that is कहारो commercial name होछि vinegar it means यार chemical name ता कोन रहइबो acetic acid option 3 is your right answer next the acid present in red ant लाल पिंपुड़ी रे क्यों एसिड थाए फॉर्मिक एसिड ऑप्शन 4 फॉर्मिक एसिड इज योर राइट आंसर the metal extracted from bauxite रू क्यों मेटल को हमें बाहर करि परिबा the metal extracted from bauxite is aluminum is your right answer next which of the following is released during photosynthesis आलोक संश्लेषण समय रे निम्नोक्त केउटा रिलीज हुए से समय रे आलोक संश्लेषण फोटोसिंथेसिस समय रे ऑक्सीजन रिलीज हुए नेक्स्ट हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन को के डिस्कवर करथिले हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन जेजे थॉमसन इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करथिले फिजन एंड फ्यूजन दुईटा कोन फिजन एंड फ्यूजन होचंदी आपनकर दैट इज कोन हे जिवो ट्राई करिवा फिजन एंड फ्यूजन होची आपनकर कोन गोटिए न्यूक्लियर रिएक्शन अटंती ठीक अछि न्यूक्लियर रिएक्शन ऑप्शन 3 न्यूक्लियर रिएक्शन हबो तो न्यूक्लियर रिएक्शन हबो ना मॉलिक्यूलर रिएक्शन हबो आई थिंक न्यूक्लियर रिएक्शन ही हबो ठीक अछि न्यूक्लियर रिएक्शन ऑप्शन 3 नेक्स्ट आज लास्ट क्वेश्चन ट्राई करिवा galvanization of iron is carried out using galvanization iron solder okay is carried out using एथिपे कोन व्यवहार करा जाय galvanization जेतला आयरन रे galvanization को जाय हमें जिंक को व्यवहार करंती ऑप्शन 1 जिंक इज योर राइट आंसर प्रश्न 1 कोन कहला व्हाट इज द splitting of white light into the constituent colors called as एटा कोन कहआ जाय जेतेले व्हाइट लाइट को कन्वर्ट करिवा कोन डिफरेंट कलर रे मींस रेड येलो ग्रीन ब्लू देन ए प्रोसेस टी को कोन कहआ जिवो डिस्पर्शन ठीक अछि डिस्पर्शन ऑफ लाइट ऑप्शन डी हे जो है राइट आंसर डिस्पर्शन ऑफ लाइट जेतेला हमें गोटे प्रिज्म रे व्हाइट लाइट को कोन करिवा प्रोपागेट करिवा देन कोन हो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट कलर गुडा को स्पिल्ड हे कि एमर्ज हबो ओके एटा कोन कहआ जिवो ए प्रोसेस टी को डिस्पर्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिवा द आउटर ईयर ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड ठीक अछि ह्यूमन रो जो ईयर माने कान रो जो आउटर पार्ट टी को कोन कहआ जाय द आउटर ईयर ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड इट मींस जब हमें टच करि पारंती ठीक अछि हमर जो ईयर रहिछि जब हमें टच करि पारंती एटा कोन कहै पिना कहआ जाय ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज द पैनक्रियास ग्लैंड सीक्रेट पैनक्रियास ग्रंथि कोन क्षरण करे पैनक्रियास ग्रंथि कोन सीक्रेट करे कोन क्षरण करे कोन इंसुलिन एंड ग्लूकागन ऑप्शन सी हो जिवो यार राइट आंसर माने रखंतु पैनक्रियास ग्लैंड इंसुलिन एंड ग्लूकागन को सीक्रेशन करे नेक्स्ट क्वेश्चन many small chemical units combine to form a large single unit called a कोन कहै जिवो प्रश्न कहूची बहुत गुडाए थिबा केमिकल यूनिट गुडा कोन हो केमिकल यूनिट कोन करिवो कंबाइन है कि फॉर्म करिवे गोटे लार्ज सिंगल यूनिट एटा कोन कहै जिवो दैट इज पॉलीमर कहै जिवो ऑप्शन सी पॉलीमर इज योर राइट आंसर नेक्स्ट साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू साउंड ट्रैवल करि परिबो नाही कहा जरिया रे वैक्यूम शून्य रे साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम बिकॉज़ साउंड ट्रैवल करिया पई किछि ना किछि गोटे मीडियम रो आवश्यकता पड़े बुझियला नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी possessed by an object due to its motion माने
ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଅବଜେକ୍ଟ ମୋସନ ରେ ରହିବ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜିଟା କ'ଣ ହବ କ୍ରିଏଟ୍ ହବ दैट इज काइनेटिक एनर्जी ଆମେ କହନ୍ତି ଗତିଜ ଶକ୍ତି काइनेटिक एनर्जी ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ऑप्शन बी नेक्स्ट डिजीज लाइक टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर कॉज्ड बाय टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस केमिति हुए केउ कारणରୁ हुए बैक्टीरिया कारणରୁ ऑप्शन ए बैक्टीरिया इज योर राइट आंसर व्हाट इज द सिंबल फॉर हीलियम हीलियम रो सिंबल कोन हिजबो हीलियम रो प्रतीक कोन हेबो हीलियम एच ई ऑप्शन ए एच ई इज योर राइट आंसर the amount of water vapor present in the air mass is called okay eta कार गोटी डेफिनेशन अटे the amount of water vapor present रहिबो जते बेले air mass रे सेटा कोन कहजिबो humidity कहजिबो humidity option b is your right answer next SI unit of power is power रो SI unit कोन SI unit of power is हमें जानछन power रो SI unit होची watt equal to joule per second option b जूल पर सेकेंड और जदि वाट रहिबो वाट मध्ये हो नेक्स्ट द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर नोन एज कोन कहै जइबो एटा को गोटी एटम रो आउटर मोस्ट लेयर रे आउटर मोस्ट सेल रे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थाय सेटा कोन कहै वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कहै जाय वैलेंसी ऑप्शन बी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इज योर राइट आंसर द केमिकल फार्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड रो केमिकल फार्मूला कोन हे जिवो सल्फ्यूरिक एसिड रो केमिकल फार्मूला है जिवो H2SO4 ऑप्शन सी H2SO4 इज योर राइट आंसर ओके ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट SI यूनिट ऑफ वर्क इज वर्क रो SI यूनिट कोन समस्त जानि छथि जूल ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर जूल हेउची वर्क रो SI यूनिट वर्क एंड एनर्जी नेक्स्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा जेउ रोग हुए सेटा कोन कहै जाय कौन कहा जाए which option is your right answer question 14 pathogens option C pathogens is your right answer next lactic acid is present in which of the following substance केउ substance रे lactic acid present थाए cod रे ठीक अछि दही रे cod is your right answer next which of the following glands produce insulin निम्नलिखित मध्यरु केउ ग्रंथि insulin produce करे that is pancreas option C is your right answer What is the formula for momentum? Momentum जहाँ को हमें संवेग कहंती संवेग बोधे ओडिया रे ओके ई मोमेंटम रो फार्मूला कोन हे जिवो मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी मास इनटू वेलोसिटी होची आपनकर मोमेंटम ठीक अछि ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर नेक्स्ट व्हाट इज नोन एज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन गोटे ऑब्जेक्ट कोन करिवो मोशन करिवो गोटे स्ट्रेट लाइन रे सेटा केउ प्रकार मोशन कहै जिवो रेक्टिलिनियर मोशन ऑन बी rectilinear motion हेबो नेक्स्ट loudness of sound is expressed in sound रो loudness को हमें मेजर करंती डेसिबल रे ठीक अछि डेसिबल इज योर राइट आंसर ऑप्शन बी डेसिबल नेक्स्ट which acid is used in lead storage batteries ओके lead storage battery रे केउ अम्ल को व्यवहार करा जाय केउ एसिड दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर नेक्स्ट व्हाट इज द सिंबल फॉर फ्लोरीन रो प्रतीक कोन What is the symbol for fluorine? F कौन है जो F फ्लोरीन होची आपनकर F F इटा लुहा ठीक अछि फेरम F इज योर राइट आंसर नेक्स्ट एल्युमिनियम इज एन एग्जांपल ऑफ एल्युमिनियम गोटे कोन हम समझ जन गोटे मेटल ओके मेटल नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज निकनेम्ड एज लफिंग गैस निम्नलिखित मध्य काहा को लफिंग गैस कहा जाय परीक्षा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस परीक्षा रे आसीबार बहुत संभावना रहिछि क्वेश्चन 23 लफिंग गैस होची आपनकर नाइट्रियस गैस को लफिंग गैस कहा जाय ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर ओके नेक्स्ट एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज प्रेशर रो एसआई यूनिट कोन हिजबो प्रेशर रो हमें जानछन पास्कल किंतु ये पास्कल को हमें न्यूटन और मीटर स्क्वायर रे मध्ये लिखि परिबा ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर अदरवाइज मन रखंतु पास्कल आज लास्ट क्वेश्चन ट्राई करबा पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड टू पिट्यूटरी ग्रंथि हमरो केउ ठारे रहिछि ब्रेन रे अटैच्ड टू ब्रेन इज योर राइट आंसर ऑप्शन ए